Assalamu alaikum students. Okay, today we are going to do the unit number 7. Unit number 7 is the name of the unit number 7 is A Wonderful Musician. Today we will do the reading of this unit. We have done the unit number 6. So you have to learn all the question answers, words, meaning, sentences, summary, like each and everything. And kindly focus on the reading because MCQs will be asked from the story. जो मेन एमसीक्यूज होते हैं वो आपको स्टोरी में से भी पूछे जा सकते हैं, जिस तरह यूनिट नंबर 6 में कुछ मेन एमसीक्यूज थे जो आपको स्टोरी में से भी पूछे जा सकते हैं। तो एमसीक्यूज जो है इसमें भी स्टोरी नंबर 7 जो मेन एमसीक्यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स, बार बार रिपीटेटिव पॉइंट्स होते हैं, वो आपसे स्टोरी में से भी पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपसे ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन ही किए जाए एमसीक्यूज में। Okay, so unit number 7 is A Wonderful Musician. Wonderful means the great, and the musician, a person who plays the music. So this is a story of a person who played a very good music, and what happened with him, and how he overcome all the situation. This is about the story of that person. It's a very interesting story. So let's start the story. The first is Orpheus. The name is Orpheus. आप लोग भी इसको मेरे साथ साथ प्रोनाउंस करें। द नेम ऑफ द पर्सन, द म्यूजिशियन इज ऑर्फियस एंड यूरिडाइस. The name is Eurydice. E is silent, Eurydice. And the name of the person who was the musician is Orpheus. And Eurydice was his wife. Okay. Orpheus lived in Greece long time ago. Greece क्या? Greece is the country name. It's a southeastern Europe country, and Athens it's its capital. Greece एक ऐसी country है with lots of island and this type of country के वहाँ पे बहुत ज़्यादा islands हैं. Crete भी आपने हमने previous story में पढ़ा था कि Crete is the nearby island of the Greece. ठीक है? So Greece is the southeastern European country. Okay. He was the most wonderful musician. वो बहुत ही अच्छा musician था. Okay. The word is musician. Musician. Musician means the person who plays music. When he play his lyre, we have talked about the lyre. Lyre is the string instrument, like U-shape harp. एक harp होता है ना, U-shape harp की तरह का instrument होता है ये. String music instrument, जिस तरह से बाकी के string instrument होते हैं, जिस तरह से violin और दूसरे instruments. So he played his lyre. The birds would stop singing and listen to his beautiful song. Whenever he played his music, it was so beautiful that birds would stop singing and started to listen his beautiful music. When he sang, the nymphs and satyrs always came out of the woods. Woods means the trees here. Wood doesn't means कि खाली wood यहाँ पे लकड़ियाँ. Wood means the forest, the trees. स्टोरी में हमारे पास wood से मतलब ये है कि forest या trees और इस टाइप की चीजें. ठीक है? Nymphs, the young goddesses, and satyrs are it's kind of the gods, like half man and the half god, जो mixture थे god और humans का. Okay, so his music was so lovely. So whenever he played his music, everyone came out and they would stand round Orpheus and beg him to continue. मतलब वो उससे हमेशा बेग करते हैं. बेग मीन्स टू रिक्वेस्ट कि वो अपना म्यूजिक कंटिन्यू करे बिकॉज इट वाज सो वंडरफुल म्यूजिक. ओके. Orpheus's music, remove the S. Orpheus's music made everyone forget their sad, bitter and wicked thoughts. उसका म्यूजिक इतना लवली था कि जो भी उसका म्यूजिक को सुनता, so everyone just forgot their wicked thoughts, evil thoughts, and bitter means the cruel thoughts. मतलब जितनी भी लाइफ की अनप्लेजेंट मेमोरीज और थॉट्स होती थी, everyone starts forgetting about it. It made everyone feel happy and good. हर किसी को उसका म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है और वो हैप्पी और गुड फील करता है. अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड बेटा आपने एक काम क्या करना है. आपका एक टास्क है
क्या आपने इस स्टोरी में से जितना भी हम आज पढ़ेंगे उसमें से आपने सारी वर्ब के सेकंड फॉर्म्स पास्ट फॉर्म्स को अंडरलाइन करना है और उनकी बाकी की तीनों फॉर्म्स फर्स्ट और थर्ड फॉर्म भी आपने चेक करनी है, ठीक है। जिस तरह से लाइक लिव्ड, sang और मेड, ठीक है। इस तरह से जितनी भी सारी प्लेड भी सेकंड फॉर्म, और आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेकंड फॉर्म ही यूज हुई है, बिकॉज उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है तो इसका मतलब है कि वो थर्ड फॉर्म है। हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था ना, हम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम थोड़ी सी ये करते हैं, एक्टिविटी करते हैं कि जितनी भी सेकंड फॉर्म्स हैं आपने उनको चेक करना है कि ये इधर सर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ओके, so Orpheus had a wife called Eurydice. The name is Eurydice. Orpheus की wife का name था Eurydice. E silent है, Eurydice. He loved her very much. He made up many of his best songs for her. She was fresh and young and the lovely lady, and they made each other very happy. So Orpheus had a wife and his name was Eurydice. Her name was Eurydice. अब यहाँ पर हम her क्यों use करें? Because her we use her with the female gender. So if we are talking about a girl or a woman, we will use the pronoun her. और her कौन सा pronoun है? It's a personal pronoun, objective case. Okay. One day Eurydice was out in the fields picking flowers with the several other girls. Several means different, ठीक है। एक दिन यूरिडाइस फील्ड्स में कुछ फ्लावर्स पिकअप करी थी डिफरेंट गर्ल्स के साथ। यूरिडाइस wanted to put the flowers in the bed in the room to surprise her husband. Suddenly a snake crawled from under the rock. Suddenly means instantly, foreign says crawled. Crawl means crept, रेंगना किसी चीज के ऊपर, जैसे अपनी by dragging the body, बॉडी को ड्रैग करते हुए जब आप चलते हैं तो दैट मूवमेंट इज कॉल्ड क्रॉल्ड। जिस तरह बेबी क्रॉल करते हैं तो इंसेक्ट्स के लिए भी हम क्रॉलिंग का वर्ड यूज करते हैं। स्नेक crawled from under a rock. Before Eurydice could move away, it bit her food. Now check it. Bit. It's a bit. Bit means it's a second form of the bite, काटना. She gave a little cry and fell to the ground. Her companions ran to help her. They carried her home to Orpheus. Companions means colleagues, partners. They carried help her, they ran to help her, and they bring her to the home of the Orpheus. They bring her Eurydice to the home of Orpheus. Okay. Next is Eurydice dies. Yeah, Orpheus did everything he could for her, but in a few hours she was dead. Obviously, when the snakes bite someone, so it's the poisonous one, so everyone can die in few hours. अगर वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है स्नेक, तो आप उससे भी ज़्यादा जल्दी से आपकी डेथ हो सकती है अगर प्रॉपर फॉरेन से ट्रीटमेंट ना किया जाए तो। Okay, so Eurydice died in just few hours. Orpheus was so sad. It was terrible to see him. He picked up his lyre and tried to play. The music was so low and sad that even the rocks and the trees began to cry. He tried to sing, but he could not. Orpheus loved so much, so when Eurydice died, he was so sad. He couldn't even play his music, but although he was a wonderful musician, but he couldn't able to play the music because he was so sad. And when she tried to play the music was so sad and lonely that uh, rocks and trees began to cry. इतना ज़्यादा उसका music sad था कि it seems like rocks and trees also crying with him. The nymphs and satyrs were sad too. They loved Eurydice and they were sorry for the Orpheus. Feel sorry means feel
bad for Orpheus. मतलब they were sorry for Orpheus. Sorry for Orpheus means they were feeling bad for Orpheus. At last, he could not bear his lonely life any longer. He decided to go and look for Eurydice in the kingdom of death. किंगडम ऑफ डेथ भी यूज कर सकते हैं लेकिन हमारे पास स्टोरी में किंगडम ऑफ डेड का वर्ड ही ज्यादा से ज्यादा यूज हुआ हुआ है सो वी विल गो फॉर इट there was a very danger this was a very dangerous thing to do okay so he decided to go to the kingdom of death to the Pluto who was ये हमने पिछली स्टोरी में भी पढ़ा था कि Pluto was the ruler of kingdom of death so he wanted to go there and he wanted to bring back the Eurydice from her. इट वॉज अ वेरी डेंजरस थिंग टू डू क्योंकि किंगडम ऑफ डेथ में जाना किसी भी लिविंग पर्सन के लिए एक बहुत ही डेंजरस बात थी इफ आई डू इट अगर मैं ये करता हूँ वी शैल बी टुगेदर इन लाइफ ही सेड इफ आई फेल देन आई शैल डाई अब उसने क्या डिसाइड किया था कि किंगडम ऑफ डेथ में जाके क्या करेगा कि अगर वो ये कर लेता है अगर वो यूरिडाइस को वापस ले आता है तो वी शैल बी टुगेदर इन लाइफ कि हम अपनी लाइफ में दोबारा एक हो जाएंगे और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आई डाई आई शैल डाई और जब हम मर जाएंगे तब भी हम आफ्टर दैट वी विल बी टुगेदर अगेन प्लूटो will take me to her and we shall be together in death अब उसने क्या डिसाइड किया अब प्लूटो प्लूटो कौन था ये हमने पहले भी स्टोरी में पढ़ा प्लूटो was the god of kingdom of death so Pluto will take me to her and we shall be together in death I must go now I cannot live without her so he decided finally he decided to go to the kingdom of death and decided to beg for Eurydice's life with the Pluto he went to the river of death अब जो उसकी जर्नी थी वो कैसी थी कि वो पहले कहाँ गया went to the river of death there was a dark boatman waited boatman a person who uh, take the boat from the other side of the river his job was to take the spirits of the dead people across the river into the dark kingdom spirits spiritual spirits मतलब spirits means जो उनकी रूहें थी जो डेड लोगों की रूह वगैरह होती है स्पिरिट रूह उनको कहाँ लेके जाता था अक्रॉस द रिवर इनटू द डार्क अक्रॉस मीन टू द अदर साइड ऑफ द रिवर रिवर की दूसरी साइड पर क्या था किंगडम ऑफ डेथ था वो उनको वहां पर लेके जाता था बोटमैन की जो जॉब थी बोटमैन कॉल्ड ऑर्फेस आई एम लुकिंग फॉर माई वाइफ विल यू टेक मी अक्रॉस द रिवर अब ऑर्फेस ने बोटमैन को क्या कहा कि आई एम लुकिंग फॉर माई वाइफ क्या मुझे आप अपनी मैं अपनी वाइफ को ढूंढ रहा हूँ कि आप मुझे रिवर की दूसरी तरफ लेकर जाओगे This ferry is for the spirits of death. The boatman replied, I cannot take you. Ferry means a boat or a ship used to carry the passengers. जो passengers के लिए transportation के लिए जो boat यूज होती है उसको हम ferry कहते हैं सो बोटमैन ने क्या रिप्लाई किया ये जो फेरी है बोट है ये स्पिरिट्स को ले जाने के लिए है यू आर अ लिविंग पर्सन सो आई कैन नॉट टेक यू टू द अदर साइड ऑफ द रिवर Orpheus made no answer. He was so clever, he made no answer. He picked up his lyre and began to play. उसने क्या किया अपना लेयर प्ले करना शुरू कर दिया म्यूजिक प्ले करना शुरू कर दिया He sang a long, sweet, sad song. The boatman listened. His cold, hard heart seems to melt. अब क्या उसके म्यूजिक ने उस पर क्या इफेक्ट हुआ उसकी म्यूजिक का कि his cold heart seems to melt seems means appeared like ऐसा लगा कि उसका cold heart melt हो रहा है cold heart means कि उसकी जो cold feelings थी कि वो जो उसने डेड पीपल को ही सिर्फ लेके जाना है और किसी लिविंग पर्सन को नहीं लेके जाना कोई मतलब फीलिंगलेस हार्ट जो उसका था वो started to melt tears ran down his cheeks I will take you but it is a dangerous place he said अब उसने क्या कहा मैं तुम्हें ले जाता हूँ लेकिन it's a dangerous place okay look at this picture this is the layer you can see it's a u-shaped heart like just u-shaped heart like instrument string instrument है ये center में इसकी strings हैं
The terrible dog. They reached far bank of the river of death. Far bank means the other bank. रिवर का जो दूसरा बैंक था, बैंक मीन्स द साइड ऑफ द रिवर, किनारा जिसको हम कहते हैं, रिवर के दूसरे साइड पर पहुंचे. ऑर्फिस climbed out and looked around him. He was at the gate of the dark kingdom. Just like this, he was at the gate of the dark kingdom. There stood a fierce dog. The pronunciation is fierce. We have read this word before in the story too. Fierce. R is slightly silent. Fierce. Fierce means vicious, cruel. एक वहां पे एक बड़ा सा fierce सा dog था, cruel सा dog था. It was as big as horse and it had 3 heads. अब how was the dog? How it looked like? कि it has as big as horse. इतना बड़ा था साइज में जैसे वो एक horse के साइज होता है. And it had 3 heads. How many of heads of the dog was? It was had 3 heads. Each head had a pair of fire red eyes and the large number of sharp yellow teeth. अब जो उसके 3 heads थे, उन तीनों heads पे क्या थी? Pair of fire red eyes. Obviously eyes का pair होता है. Fire red means the dark red. जिस तरह fire red होती है ना, उस तरह की, मतलब रेड आई जो थी होती हैं उस तरह की उसकी आई थी. एंड द नंबर ऑफ शार्प येलो टीथ, और बहुत ज्यादा उसके शार्प से येलो से टीथ थे. द डॉग saw Orpheus and began to show all its teeth. जब डॉग ने ऑर्फियस को देखा तो वो मतलब उस पर गुर्राने लगा. It showed all its teeth. It was ready to attack Orpheus and tear him to pieces. वो बिल्कुल रेडी था ऑर्फिस पे अटैक करने के लिए. एंड टीयर हिम इनटू पीसेस. टीयर मींस टू रिप ऑफ, मतलब उसको चीर फाड़ करने के लिए, उसके टुकड़े करने के लिए. he was ready to attack and ready to tear him. However means ताहम, Orpheus picked up his lyre and began to play. The music was soft and gentle. अब उसने किस तरह का म्यूजिक प्ले किया? He played different music at different times. When he was at the boatman, when he was going when he was begging to the boatman, he played the sad music, and now the music was soft and gentle. The dog lay down on its back and waved its leg in the air. अब डॉग का रिएक्शन क्या था? वो अपनी बैक पर बैठ गया और वेव इट्स लेग इन द एयर. जो फ्रंट उसकी लेग्स थी वो उनको एयर में वेव करने लगा. और फिर स्क्रैच द डॉग अंडर ऑल 3 tiny chins. It shuts its 6 eyes and licked his fingers. Animals के लिए जो हम pronoun use करते हैं, that was it. It shut mean, यानी it means the dog shut its 6 eyes, क्योंकि pair of eyes था, 3 heads to the 6 eyes. And scratched means to make a mark, मतलब जिसे कहते हैं खुरचना, निशान डालना. लेकिन यहाँ पर scratch करना means उसके tiny chins के नीचे वो हाथ फैला रहे थे, जिस तरह हम प्यार से अपने पेट्स वगैरह को scratch करते हैं. You are a nice old dog. Okay, you are यहाँ पे contraction form में है. Said Orpheus, you'll let me through the gate, won't you? Okay, ये भी अब contraction form में है. You will and won't. अब इसको हम won't पढ़ेंगे. You will. The dog waved its tail and licked the Orpheus again. Dog ने अब उसने उससे question किया कि you will let me through the gate, won't you? क्या तुम ऐसा नहीं करोगे? अब उसने question किया ना उससे कि क्या तुम मुझे गेट के पार नहीं लेके जाओगे? तो the dog waved its tail. उसने अपनी tail को wave करके आंसर किया कि वैसा करेगा. A dark twisted path led to the palace of the dark gold Pluto. Orpheus followed it for many miles. अब वो उसको गेट के अंदर लेके गया डॉग, और वो it was a dark twisted path. Twisted means there was a lot of turns and twists. Led to the palace of the dark gold Pluto. अब वो जो ट्विस्टेड पार्ट था वो कहाँ जा रहा था? पैलेस की तरफ, उसके प्लूटो के. एंड ऑर्फिस फॉलोड फॉर मैनी माइल्स. काफी माइल्स तक चलने के बाद भी उसको पैलेस मिला, यानी कि काफी दूर था, गेट से भी काफी दूर था.